Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. So today's topic is electricity. Let's learn about electricity generation and supply, electric cell, electric bulb, electric circuit, electrical circuit of a torch, electric conductors and insulators. We use a variety of things in our day-to-day life that run on electricity, such as fans, lights, television, radio, refrigerator and computer, just to name a few. Electricity has become such an important source that it is difficult to imagine our lives without it. तो आज के टाइम में जितनी भी चीज़ें आपके आसपास हैं, टेलीविजन्स, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, ये सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं और हमारी लाइफ इसके बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. In the picture given alongside, children are using different electrical appliances. Identify the appliances by circling them. In the spaces provided alongside the picture, write that these appliances are used for. तो आपके साथ में ही पिक्चर दे रखी है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं. आपको उनको सर्कल करना है और साथ ही साथ लिखना है कि ये सारे अप्लायंसेस किन किन चीज़ों के लिए यूज़ करे जाते हैं. Life was very different before people learned to use electricity for their various needs. About 100 years ago, even in cities, people did not have electrical lighting. They used lamps and lanterns to light up their homes and streets. There were no electric fans either. Even today, in some far-off villages where electricity has not been provided, this is the way to light up their homes at night. तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन या इन्वेंशन नहीं हुआ था, उससे पहले शहरों में भी लोग कैंडल्स और लैंटर्न्स का यूज करते थे लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए. और आज की डेट में भी काफ़ी सारी ऐसी रिमोट लोकेशंस हैं, ऐसे गाँव हैं जहाँ पे लाइट नहीं है और आज भी वहाँ के लोग लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए कैंडल्स और लैंटर्न्स का यूज करते हैं. Things that run on electricity have electric current passing through them. In this chapter, you will learn about electric current, what is needed to produce it, the conditions required to make an electric current flow, and the materials through which an electric current can flow. On the practical side, you will learn some very interesting things like how to make a small bulb glow and how to make an electric switch. तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक प्रॉपर एक पैटर्न फॉलो करती है आपकी चीज़ों को रन करवाने के लिए. तो इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे. Do you know? A dynamo runs on fuel such as diesel. It converts energy obtained from the fuel to electrical energy, that is electricity. तो जो एक डायनामो होता है वो फ्यूल से रन करता है, ये इस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है और उसके बाद वो चीज़ फंक्शन करती है. Electricity generation and supply. There are three types of power plants which are used for generating electricity on a large scale. तो आपके basically तीन टाइप के power plants यूज करे जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए. These are number 1 hydroelectric power plants or tidal power plants. Hydroelectric power plants use kinetic energy of the moving वाटर. तो आपके जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाले पावर प्लांट्स होते हैं या फिर हाइडल पावर प्लांट्स होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो वाटर करंट्स होते हैं, वाटर की मूवमेंट होती है, उस एनर्जी को यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए. Number 2 thermal power plants. These are based on coal, diesel और natural gas. तो thermal power plants में यूज होता है कोल, डीजल और नेचुरल गैस. Number 3 atomic power plants. These are based on the nuclear fission of uranium-235. Depending upon the type of generator used, either the alternating current AC or the direct current DC is generated. In our country, we use AC generators, so we get AC from our power plants. The electricity supplied to our homes by the electricity supply companies is the alternating current. AC. Electricity we use at home, in our factories, at shopping malls come from the power stations. What happens when the electricity supply fails at night and it is pitch dark? We look around for a torch, press its switch. What happens? It bulbs starts glowing. Bulb will start glowing only when electricity is passed through it. Then, what is the source of electricity in the torch? तो आपकी जो एटॉमिक पावर प्लांट्स होते हैं ये न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम 235 उससे जनरेट करते हैं और इंडिया में खास करके आपके जनरेटर्स में एसी यूज करा जाता है यानी कि अल्टरनेटिंग करंट. उसी तरीके से जो आपकी लाइट जब रात में चली जाती है तो आप क्या करते हैं, आप एक टॉर्च ढूंढते हैं, टॉर्च की लाइट को स्विच करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास होती है आपका जो बल्ब है वो जलना शुरू हो जाता है.
Do you know? Do you know cell and battery are not same? A cell is a single unit whereas two or more cells can be connected end to end to make a battery. तो सेल और बैटरी एक चीज नहीं होती है, एक सिंगल यूनिट होता है, उसको सेल कहा जाता है, और ऐसे दो या दो से ज्यादा सेल्स को कंबाइन करके बैटरी बनाई जाती है. Activity 1. Aim to find out the source of electricity in a torch or flashlight. Materials required: torch with cells. Procedure: take a torch and open its screw cap. Look what is there inside it. It has butterfly cells inside it. Take these out. There may be 2, 3 or 4 cells inside, depending upon the battery size. Put the screw cap back on the body of the torch. Press the switch. Does the bulb glow? No. Put the cells inside the torch and replace the screw cap. Now switch on the torch. Does the bulb glow? Yes, the bulb glows. Conclusion: the battery cells supply the required electricity to the bulb. तो आपका जो टॉर्च है, अगर आप उसको खोलेंगे तो आपको अंदर बटरफ्लाई बैटरीज दिखाई देंगी. अगर आप उन्हें हटा देंगे, वापस बंद करेंगे उसका ढक्कन और जलाएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आपका जो टॉर्च है वो ग्लो नहीं करेगा. तो बैटरीज की रिक्वायरमेंट होती है टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए. इलेक्ट्रिक सेल. We have learned that in an electric torch, electric cell is the source of electricity. The electric cell is also used in portable devices such as transistor radios, cameras, quartz wrist watches, wall clock, calculators, remotes for TV, and a variety of mechanical toys. The cells are also of different sizes, made to suit the requirements of a particular electric device. Some of the cells are shown in figure here. तो आपके जो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं वो आपकी अलग अलग चीज़ों को यूज़ करने के लिए बनाए जाते हैं और उसमें लगाए जाते हैं. जैसे कि आपका जो टीवी रिमोट होता है उसमें सेल लगाया जाता है, जिसमें फिर अलग अलग रेस की वजह से आपके चैनल्स चेंज होते हैं. आपकी जो वॉचेस होती हैं, रिस्ट वॉच होती है, उसमें वो सेल्स यूज़ होते हैं. अलग अलग चीज़ों में इन सेल्स को यूज़ करा जाता है ताकि वो चीज़ें परफॉर्म कर सकें. Do you know? Electricity travels at the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 meters per second. जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी तेज़ी से ट्रैवल करती है और उसकी जो स्पीड है वो है 3 into 10 to the power 8 meters per second. Let us now study the outside and inside of the most common type of a dry cell. Activity 2. Aim to study a dry cell. Take a used waste dry cell. Observe carefully the appearance and shape of the cell. Note that its top has a metallic cap in the center. This is the positive terminal of the cell. The metal disc-shaped bottom end of the cell is its negative terminal. Wherever a cell is to be put to use, make sure that both of its terminals get in proper contact with the terminals of the device. Now carefully break open the cell. Note the kind of things and materials present inside it. The black substance present inside is the waste remain of the chemicals. The thick black rod placed in the center of the cell is the carbon rod whose end acts as the positive terminal. The zinc container acts as the negative terminal of the cell. The cylindrical side of the cell is covered with a plastic sheet. तो आपका जो ड्राई सेल यानी कि वेस्ट सेल होता है जो काम नहीं करता है, जब आप उसके दोनों टर्मिनल्स देखेंगे, दोनों एंड्स में एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव टर्मिनल होता है, जिसको आपकी जो भी डिवाइस है उसमें अच्छी तरीके से फिट करना होता है ताकि वो काम कर पाए. जब आप इस ड्राई सेल को खोलेंगे तो आपको इसमें ब्लैक रिमेन्स दिखाई देंगे जो यूज्ड केमिकल्स होते हैं, और इसमें आपको एक कार्बन की रॉड भी दिखाई देगी जिसकी वजह से आपका जो सेल है वो काम करता था. In an unused cell, some chemicals are stored. When a cell is connected with a device and the device is switched on, some chemical reactions take place which produce electric current for the working of the device. Over the time, when all the chemicals present inside the cell get used up, the cell stops providing electric current and is called dead. तो आपके सेल्स में अलग अलग केमिकल्स स्टोर्ड होते हैं जिनकी वजह से आपके सेल में इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है, लेकिन वंस दीज केमिकल्स आर यूज्ड अप, जो सेल होता है वो काम करना बंद कर जाता है. Once dead, the cell cannot be used again and has to be replaced with a new one. For many devices, the amount of current provided by one cell is insufficient and therefore two or more cells are used together.
The combination of two or more cells is called a battery. The correct way of using a combination is shown here. तो आपके जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग डिवाइसेस में यूज करे जाते हैं. इसमें जो केमिकल्स होता है उसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होती है. कभी कभी कुछ कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं कि एक सिंगल सेल के जो केमिकल्स होते हैं वो सफिशिएंट नहीं होते हैं, इसीलिए उसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स लगाने पड़ते हैं. और ऐसी डिवाइसेस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स होते हैं उनको बैटरी कहा जाता है. इलेक्ट्रिक बल्ब. An electric bulb or a torch bulb has an outer case made of glass that is fixed on a metallic base. With the help of a magnifying glass, let us look what is inside the glass bulb. It consists of a tiny thin wire called a filament. The filament is fixed to 2 thicker wires that also provide support to it as shown in the figure given on the next page. One of these thick wires is connected to the metal case at the base of the bulb. The other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base. The metal tip at the center of the base and the metal casing as its lower end act as terminals of the bulb. तो आपकी जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है जब आप उसे खोल के देखेंगे तो उसमें एक फिलामेंट होता है जिससे कि आपकी जो लाइट है वो एमिट होती है. ये टर्मिनल्स अलग अलग चीज़ों से कंबाइन करके अलग अलग वायर्स के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है जिसकी मदद से आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो फिलामेंट के थ्रू लाइट एमिट करता है. Fact file. An electric bulb is filled with an inner gas. Inert means does not react, so that the filament does not burn up when it gets hot. तो आपके जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं उसमें इनर्ट गैसेस होती हैं, वो गैसेस जो कि रिएक्ट नहीं करती हैं ताकि जैसे ही फिलामेंट हीट अप हो वो आग ना पकड़े. These two terminals of the bulb are fixed in such a way that they do not touch each other. When electric current is passed through the filament of the bulb, the filament becomes hot and gives out light. ये जो दोनों टर्मिनल्स अटैच करे होते हैं बल्ब के अंदर फिलामेंट के थ्रू, ये इस तरीके से अटैच करे होते हैं कि ये आपस में टकराते नहीं हैं. जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होती है फिलामेंट जो होता है वो हीट अप होता है और ग्लो करने लगता है. डू इट. Fill in the blanks. अब कुछ blanks हैं जो आपको खुद से करने हैं. How to connect a bulb to an electric cell? How about making and using a homemade torch? Let us learn how to do it. Activity 3. Aim. To make a simple electric torch. Procedure. Take 4 small length electric wires, scrape about 3 to 4 centimeter of plastic covering from both the ends of each wire so that the metal wires are exposed at the ends. Now rub the exposed ends of metal wires with the sandpaper. Take a torch bulb and fix one metal and each of 2 electric wires to the terminals of the bulb as shown in the figure here. Use electrician's tape to fix the wires. Now you have 2 more free metal ends. Wrap one of the free metal ends to one leg of the aluminum clip. See figure. Now take the other 2 wires and connect one metal end of each of them to the 2 terminals of the cell and wrap around the electric insulation tape as shown in figure. Again, we have 2 free metal ends of 2 wires. Join the free metal end of a wire of the bulb with one of the free ends of a wire with the cell by twisting the 2 ends together. Your torch is ready to work. As soon as you will connect the only free metal end left with the aluminum clip, the bulb will glow. तो ये प्रोसीजर, ये एक्टिविटी जब आप करेंगे आप घर पे ही खुद से टॉर्च बना सकते हैं. आपको कुछ वायर्स लेनी है, बल्ब लेना है, बैटरीज लेनी है, सैंड लेना है, एल्यूमिनियम क्लिप लेनी है. ये सारे प्रोसीजर्स को जैसे जैसे आप लाइन बाय लाइन फॉलो करते रहेंगे एंड में आपका एक टॉर्च तैयार हो जाएगा जिसके मेटल एंड, जो खाली एक मेटल एंड बच जाएगा एल्यूमिनियम क्लिप के साथ, उसको आप अटैच करेंगे तो आपका जो टॉर्च है वो ग्लो करने लग जाएगा. Here the aluminum clip is working as a switch. You can put your bulb on or off any time just by connecting or disconnecting the free end with the clip. तो यहाँ पे जो aluminum clip है वो switch की तरह काम कर रहा है. जैसे ही आप वायर को उसमें लगाएंगे आपकी लाइट जलेगी, जैसे ही हटा देंगे वैसे ही आपकी जो लाइट है वो जलना बंद हो जाएगी. Do you know? A fuse, short for fusible link, is a safety device that prevents a large amount of current from flowing into a device or appliance. It consists of metal wire that melts easily when heated. तो आपका जो फ्यूज, जो फ्यूजिबल का ही छोटा फॉर्म है, ये अलग अलग अप्लाइंसेस में लगाया जाता है ताकि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत तेजी से ना फ्लो करे. Switches or key. We know that the stopping and starting of current flow in a circuit can be controlled by a switch, or in other words, a key. When a switch is turned on, a gap in the circuit is bridged by a conducting material through which the current flows.
When the switch is turned off or opened, the conducting material is moved so that a gap is formed and the current stops flowing. All circuits need switches to stop the battery from going flat. तो आपके जो switches या keys होते हैं वही आपका main source होता है इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने के लिए. जैसे ही आप ऑन करते हैं वो फ्लैप गिर जाता है और इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग जाती है. जैसे ही आप स्विच बंद करते हैं वो फ्लैप वापस ऊपर उठ जाता है, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाती है. इलेक्ट्रिक सर्किट. The complete path is sometimes called complete electric circuit or closed electric circuit. Here figure represent closed electric circuit. If the electric circuit is broken at any point in its path, then the bulb does not glow. Such an electric circuit in which the path of electricity is broken at some point is called incomplete electric circuit or open electric circuit. It is shown in figure B. When the electric circuit is complete, the electricity starts flowing from the positive terminal of the electric cell to the filament of electric bulb and from there to the negative terminal of the electric cell as shown in figure C. तो आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो एक साथ फंक्शन करता है करंट को पास ऑन करने के लिए एंड फाइनली उस अप्लायंस को शुरू करवाने के लिए. जैसे ही ये सर्किट आप ब्रेक कर देंगे, बीच से कोई भी एक चीज़ हटा दीजिए या फिर कट कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होना वहीं पे रुक जाती है और आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो बल्ब हो, रेफ्रिजरेटर हो, एसी हो, वो काम करना बंद कर देता है. Due to the flow of electricity in the filament of the bulb becomes white hot and starts giving light. तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, फिलामेंट हीट अप होता है, जिसकी वजह से व्हाइट लाइट एमिट होती है. पार्ट ऑफ अ सर्किट सिंबल सिंगल सेल. तो यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे सर्किट्स के कुछ पार्ट हैं, राइट हैंड साइड पे उन्हीं के सिंबल्स हैं. सिंगल सेल, बैटरी ऑफ 3 सेल, ओपन की और स्विच, क्लोज्ड की और स्विच, इलेक्ट्रिक बल्ब नॉट ग्लोइंग, इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोइंग. तो ये सारे आपके अलग अलग सिंबल्स हैं. डू इट. अब कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके आंसर्स आपको खुद से देने हैं. Electrical circuit of a torch. Since you are now familiar with electric circuits, cells and the torch bulb, you will be able to understand the working of a torch. The figure given alongside shows the inside of a torch. The negative terminal of the cell, labeled 1, presses against the spring at the base of the torch. The positive terminal of the cell, labeled 2, presses against the metal tip at the base of the bulb. तो अब क्योंकि आपको सेल को भी पता है, आपको क्या होता है, बैटरी भी पता है, टर्मिनल्स भी पता है, तो अब आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा जो लेफ्ट साइड में आपको टॉर्च की फिगर दे रखी है उसको देखकर ये बता पाना कि किस तरीके से नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स एक साथ अलग अलग चीजों को टच करते हुए इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं. There are 3 metal strips. A connected with the metal case of the bulb, B connected with the spring and C which is part of the switch. While metal strips A and B are fixed, C can be pressed and made to slide. When you press the switch, the strip C touches A and B and the circuit is complete. Then current flows through the circuit consisting of the metal strips, the bulb, the cells and the spring. This makes the bulb glow. तो आपकी जितने भी अंदर टॉर्चेस होते हैं उसके अंदर जो बैटरीज या बल्ब्स होते हैं वो बेसिकली 3 मेटल स्ट्रिप से कनेक्टेड होते हैं जो अलग अलग चीज़ों के साथ, एक स्ट्रिप दूसरी स्ट्रिप के साथ होती है, ए बी के साथ कनेक्टेड होती है, सी स्लाइड कर जाती है. जैसे ही आप इनको एक साथ जोड़ते हैं, एक सर्किट में फॉर्म करते हैं, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना देता है जिसमें बहुत ही ईजिली आपका जो करंट है वो फ्लो करने लग जाता है. Fact file. The earth itself is a conductor of electricity. This property of earth is used to drain any leakage of electric current from electric devices. This process is called earthing. तो आपका अर्थ एक नेचुरल कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए आपके घरों में अर्थिंग कराई जाती है ताकि अगर इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी लीकेज है तो वो आपको शॉक ना दे. There are some materials present on earth which are neither conductors nor insulators. These materials are called semiconductors. The base of modern electronic technology is semiconductors which are used in all electronic devices. Human body is a good conductor of electricity. That is why it is very easy for our body to receive electric shocks. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपकी अर्थ में जो ना ही कंडक्टर्स होते हैं ना ही इंसुलेटर्स, इन्हें सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है. जो ह्यूमन बॉडी होती है इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए आप कभी भी किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस को छूते हैं तो आपको शॉक फील होता है. इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. Can an electric current flow through any substance?
Is there any particular reason why electric wires are made of metal and covered with plastic? Can an electric current pass through liquids and gases? The following activity will help you find answers to some of these questions. तो इस एक्टिविटी से आपको पता चलेगा कि क्या इलेक्ट्रिक करंट हर चीज से पास थ्रू कर सकता है या नहीं. Activity 4. Let us check some materials around us to find whether they are conductors or insulators. Take a bulb, a dry cell, connecting wires, a piece of cardboard of the size of a big notebook, and 2 nails or screws. Collect a few objects to be tested like a sewing needle, hairpins, ice cream spoon, metal spoon, eraser, matchstick, etc. Connect the bulb, the dry cell, and 2 nails with the help of connecting wires and place them on the cardboard piece. Fix the 2 nails at a gap of 2 cm between them as shown in the figure alongside. You have prepared the conductor insulator tester. Pick any object whose material is to be tested. Keep it on the nails in such a manner that the object touches both the nails simultaneously. If the bulb glows, it shows that the object is a good conductor of electricity, and if the bulb does not glow, it shows that the object is an insulator. Test all the objects for their conductivity one by one. तो आप एक बल्ब लीजिए, ड्राई सेल लीजिए और कनेक्टिंग वायर लीजिए और एक पीस ऑफ कार्डबोर्ड लीजिए. जैसे ही आप इनको कनेक्ट करेंगे एक अपैरेटस बन जाएगा और दोनों नेल्स पे जो आपकी नीडल्स या फिर नेल्स हैं उस पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे. अगर आपका बल्ब जल रहा है इसका मतलब वो कंडक्टर है, अगर बल्ब नहीं जल रहा है इसका मतलब वो इंसुलेटर है. Materials that allow an electric current to flow through them or conduct electricity are called good conductors or simply conductors. Metals are good conductors of electricity, but not all metals conduct electricity equally well. For example, silver conducts electricity better than any other metal does. The lead of a pencil is made of carbon, which too is a conductor. तो आपके अलग अलग मेटल्स होते हैं. यूजुअली आपके सारे ही मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कंडक्ट नहीं कर पाते. सिल्वर आपका सबसे अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का सारे मेटल्स में से. जो आपकी पेंसिल की लेड होती है वो भी एक अच्छी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की. Materials which conduct almost no electricity are called bad conductors or insulators. Wood, plastics, glass, rubber, cork, paper and mica are examples of insulators. ऐसे objects जो या तो बिल्कुल ही पास नहीं करवाते इलेक्ट्रिसिटी को या थोड़ा बहुत करवाते हैं उन्हें bad conductor या फिर insulator कहा जाता है. Uses. Electrical wires are usually made of copper. Though silver is a better conductor, it is not used because it is too expensive. Aluminum is also used to make wires, switches, terminals, plugs, filaments, and so on. Are made of various metals. You have already come across one use of carbon in the cell. It is used in many other electricity devices. तो आपकी अलग अलग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं जिसमें अलग अलग मेटल्स होते हैं उनको कंडक्ट करवाने के लिए. सिल्वर सबसे अच्छा है लेकिन यूज नहीं किया जाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है. Insulators play an important role in electricity circuits and equipment. For example, in switches, an insulating material, plastic or bakelite, separates the metal terminals from each other. The electric wires used in most circuits are insulated either by a plastic or rubber cover or by a coat of insulating enamel. The insulation on wires ensures that an alternative circuit is not created in case the wires touch, that is, it prevents a short circuit. A short circuit between wires can cause a large current to flow, which may even cause a fire. The insulation on wires also protects us from electric shocks, which we would get if we touched a conductor connected to the mains. The tools used by electricians, such as line testers, screwdrivers, and pliers, have insulated handles to protect them from electric shocks. Do you know why we get electric shocks? Because the human body is a good conductor of electricity. तो आपकी अलग अलग जो मेटालिक डिवाइसेस होती हैं जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी के फंक्शनिंग को टेस्ट करने के लिए बनाई जाती हैं उसमें अलग अलग टाइप की कोटिंग, इनामल की कोटिंग, रबर की कोटिंग करी जाती है ताकि जो उसको टेस्ट कर रहा है
उसको शॉक ना लगे। और ह्यूमन बॉडी को शॉक इस वजह से लगता है क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यूजेस ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। द कंडक्टर्स आर यूज्ड टू मेक दोज पार्ट्स ऑफ an electric device from which the current must flow. Insulators are used to cover the conductors so that the user does not receive an electric shock. तो एक डिवाइस में कंडक्टर इसलिए लगाया जाता है ताकि करंट फ्लो करे, और इंसुलेटर उनके बाहर इसलिए लगाया जाता है ताकि जो यूजर उसे यूज कर रहा है उसको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। Caution with electricity. A danger sign is displayed on electrical poles, substations, transformers, etc. This is to warn people against the dangers to electricity. Electric current is very dangerous whether generated in power plants or by portable generations. Although the electrical devices used at homes, in offices and factories are designed in such a way that the safety of the consumer is ensured, even then accidents or mishappenings can occur unalarmingly. This results into serious injuries, permanent disability or even death. Therefore, to keep safe, we should strictly follow these precautions. जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल पोल्स होते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत तेजी से करंट फ्लो कर रहा होता है, वहाँ पे आपको साइन दिखाई देगा डेंजर का, क्योंकि इसकी वजह से आपको परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो सकती है और आपकी जान भी जा सकती है। Never play with sockets or electric wires. Never touch an electric switch, plug or device with wet hands. Wear dry rubber slippers or stand on a dry wooden or plastic base while using electrical appliances. Never switch on or off a geyser while barefoot, especially if the floor of the bathroom is wet. In case of a short circuit or a spark in a switch, put it off immediately with the help of a plastic or a wooden stick. In case of a fire in electric wires, never use water to extinguish it. Instead, first switch off the mains, then use dry sand to extinguish the fire. ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं। जैसे कि आपके जो स्विचेस हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के, उनको गीले हाथ से ना छुएं। जो आपके गीजर्स लगे हुए हैं वॉशरूम्स में, उनको हमेशा स्लिपर्स पहन के ही ऑन ऑफ करें। कभी शॉर्ट सर्किट आ गया है तो मेन स्विच को ऑफ कर दे। कभी आग लग जाती है स्विचेस की वजह से, इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से, तो कभी भी पानी ना डालें, उसको पहले मेन सर्किट को बंद करें, उसके बाद सैंड से उसको बुझाने की कोशिश करें। डू इट, फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब कुछ ब्लैंक्स हैं जो आपको खुद से करने हैं। कीवर्ड्स: electric current. An electric current is the flow of electric charges per unit across the cross section of a wire. Electric battery. An electric battery is a storehouse of charges. Battery terminals. The terminals of a battery are the two contact points of the battery which supply. Filament. A filament is a fine wire in the bulb which gives light when heated up by the flow of current through it. Bulb terminals. The terminals of a bulb are the two contact points to connect a bulb in an electric circuit. Electric circuit. An electric circuit is a complete path of flow of electric current. Conductors. Conductors are materials which allow current to pass through them. Insulators. Insulators are materials which do not allow current to pass through them. ये कुछ ऐसे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कीवर्ड्स थे जिनको हमने चैप्टर में देखा और उनके बारे में जाना. Points to remember. A torch bulb lights up on getting electric energy from an electric cell. An electric cell has a metal cap which is the positive terminal and a metal base which is the negative terminal. An electric bulb consists of a filament that is fixed to two thick wires which form two terminals. When electric current flows through the filament, an electric bulb gets heated up and starts glowing. Electric current is a form of energy, that is electrical energy, which gets converted into heat and light when it flows through an electric bulb or any other electrical appliance. An electric circuit is a closed loop in which electric current can flow. In a closed electric circuit, the electric current passes from the positive terminal of the electric cell to the negative terminal of the electric cell. Electric switch is a simple device that is used for making and breaking the electric circuit.
Conductors are the materials that allow electric current to flow through them. Insulators are the materials that do not allow electric current to flow through them. तो हमने इस चैप्टर में स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें देखी. हमने इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे जलता है, फिलामेंट किस तरीके से फंक्शन करता है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स मिला के डिवाइसेस कैसे बनाई जाती हैं, सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं, 2 से ज़्यादा सेल्स होते हैं तो उन्हें बैटरीज कहा जाता है, कंडक्टर्स किन्हें कहते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हमने आज जाना. स्टूडेंट्स, हियर कम्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है.